Hello, good afternoon. Welcome back to another session with me. Right, we had discussed many things from before. We had started with parts of speech and with different other verb forms also. Right, today you must have seen in the screen also there that today we'll be discussing regarding some WH questions, and then we'll continue regarding the picture form. Right, picture forms or speaking activities. What are there? Right. So just try to understand this that we frame different sentences in the starting. आप लोग ने different sentences ऐसे frame किया था. Sentence का हर एक word का मतलब समझा था. क्या noun है, क्या pronoun है. फिर बाद में आपने verbs के बारे में भी देखा था. आपने फिर बाद में एक operation to be verb जो होता है to be verb जो हम लोग be verb forms जो हम लोग देखते थे. That also we got to know. We also framed questions with that. We also wrote negative forms for that, right? हमने negative forms भी देखा, questions भी frame किया, और वो सब करके हमने different sentences ऐसे frame किए. अभी इसका जो actual usage होता है, आप कैसे बात करते हैं, ठीक है? That is what you'll be discussing today. I have a small activity for those WH questions where you have आपके पास sentence दिया रहेगा. You will have sentences. You have to frame that into an interrogative form. बहुत आसान है वो. उसके बाद वी लर्न अकॉर्डिंग टू द स्पीकिंग कार्ड्स. आपको ऐसे कार्ड प्लेस किया जाएगा, आपको आंसर कहना है इन इंग्लिश टायर. यू कैन राइट दैट ऑन योर नोटबुक. आप वो नोटबुक पे ऐसे लिख भी सकते हैं. इट इज बेटर इफ यू कैन स्पीक, दैट विल आल्सो बी ग्रेट. राइट, दोज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस जो आप रोज हिंदी में बात करते हैं. राइट, दैट दो सिंपल क्वेश्चंस विल बी देयर. ओके, आफ्टर दैट ये सब होने के बाद, ठीक है, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. अगर मैं पहली बार आपसे मिलता हूँ, ठीक है, हाउ विल यू टेल अबाउट योर सेल्फ. आप कौन है, कहाँ से हैं, वो छोटे से एक स्मॉल एक्टिविटी व्हाट वी हैव. कंटिन्यूइंग विद दैट विल हैव अ स्मॉल इंटरव्यू. राइट, सो आज थोड़ा एक्टिविटी यू विल हैव one small a little more activities what you'll have from the before classes. Right, more of a speaking one is there today. Right, and yes, today it's Makar Sankranti. Happy Sankranti for everyone. ठीक है, एक घंटा का क्लास करने के बाद you can all go have fun with your family, right? Okay, let's start with today's session then. Okay, let me just share you the screen and then we'll start doing different things. Great. Okay, so WH questions का एक छोटा सा sheet है. There is a small sheet which I think you will be able to understand and do it quickly. आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे और जल्दी कर लेंगे उसे. ठीक है, let's move forward then. These are the things what we'll be doing today. Right? Okay, great. Now ये देखिएगा. These are different sentences. यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे different sentence दिए गए हैं. And there is a WH word also what is given. आपको वो WH word से वो question वहाँ पे frame करना है. Right, now please observe that where जो words हमने discuss किया था last session में, हर एक word WH word का अलग अलग meaning होता है. every word कहाँ use किया जाता है वो हम देखते हैं. Right, हमने discuss किया था उसके बारे में. You can just refer back. एक बार आप वापस वो वीडियो भी देख सकते हैं. Right, please do watch that. There was a small table what I gave regarding those WH words. आप उसे देख करके भी समझ में आ जाएगा. Right, today read these following sentences and try to frame the WH question there. बहुत आसान है, it's very easy. I can also help. You can take this, you can stop the video here right now and you can do that, or else you can just directly do it with me also. Right, they are going to school. Okay, that is the first sentence there. Now how will you frame a question? ये sentence का आप question कैसे frame करेंगे? Where जो शब्द use करके. Now where जो हो जाता है that is generally for a place, right? Now how will you tell that? Exactly. If you have said this, then you are absolutely right. Where are they going? Where are they going? Absolutely right हो जाएगा. That is the right one. John killed the snake. Now with the word who जो होता है कौन, right, so who, exactly the subject there, subject जो है उसके basis में हम लोग ये करेंगे कौन. Right, who killed the snake? Who killed the snake? Right,
लाइक दिस। ऑलवेज द क्वेश्चन, वहाँ पे बहुत आसानी से आप ऐसे सेंटेंस देख करके आप रिवर्स करके क्वेश्चन भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में बता सकते हैं। नाउ दिस तो मैंने यहाँ पे WH क्वेश्चंस के लिए किया है। आप लोग यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट विथ यस नो क्वेश्चंस ऑल्सो। दे आर गोइंग टू स्कूल, आर दे गोइंग टू स्कूल, तो वहाँ पे आंसर ऑल्सो शुड कम विथ yes or no. Yes, they are going to school, like that. But yeah, that's a WH form. So WH forms के लिए तो हम लोग answer is always in a statement. So you don't need to put yes or no there. Right. My name is Adam Smith. What is your name? Simplest one. Right. Please remember. Please do remember. ये सब interrogative sentences हैं where while writing. Just hold on one second. Yeah, whenever you're writing, यहाँ पे you have to put an interrogative question mark symbol. But आप जब बात करते हैं, it is the voice what you can. What is your name? थोड़ा expression के साथ आप कहेंगे, then it comes with an sound and that way of speaking. ठीक है, तो पता चलता है कि एक question पूछा जा रहा है. Well, generally you can say ask, right? What is your name? Right? General sound, general way of asking. Okay, this is Adam's car. Now, how will you frame that? यहाँ पे, my bad. Okay, yeah. This is Adam's car. Question यहाँ पे whose के बारे में है. ठीक है, whose किसका? Right? Whose car is that? Whose car is this? That तो दूर के लिए हो जाता है. हम लोग ने demonstratives में पढ़ा था. This नज़दीक, that दूर. Right? Yeah. So, whose car is this? Okay, if you have said this, absolutely right. Okay, I get up from sleep at 6 a.m. Right, now, समय, when, right? It's time. When do you get up in the morning? Or when do you get up? When do you get up from sleep at, yeah, when do you get up? Simple. Why do you want to get up? Make it difficult, right? When get up from sleep at 6 p.m. Okay, yeah. Just hold on, just give me a moment. Just give me a moment. Yeah, now the next one. I went to Delhi by train. Now, how a question यहाँ था. HWH word here. ठीक है, how will you frame that here? Okay, I hope it's in live stream here. You're able to hear me properly. Okay, just give me a moment. I'll just check it. Give me 1 second. Okay. Yeah, okay. Yeah, it's great now. I can, yes. Okay, I went to Delhi by train. Now, how will you say that? How did I go to Delhi? Right. Now, went यहाँ पे ये आ जा रहा है. ठीक है, went is in past form there. ठीक है, go का past form में आ जाता है. That's why you need to put interrogative में आपको present tense में आपको बात करना पड़ता है. So, how, right? How, right here. How did you go to Delhi? How did you go to Delhi? Like this. Okay, he wanted to buy a pen, a red pen. Now, यहाँ पे specific, which pen did you, a particular this is there and the word which जो हो जा रहा है, right? It's for a thing. Now, which pen did he want to buy? Right? So again, wanted यहाँ पे आ जा रहा है. That is in past form. That's why you need to use it. वहाँ पे did हमें कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है? Which pen did he want to buy? Right? Which pen did he want to buy? Like this way. ठीक है?
प्लीज डू रिमेंबर, इधर वांट एक मेन वर्ब हो जा रहा है, टू बाई तो एक इन्फिनेटिव हो जाता है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट वे। ठीक है, जो मेन वर्ब यहाँ होता है, टू वर्ब जो आ जाता है, टू वर्ब्स जो हम लोग बात करते हैं वो इन्फिनेटिव्स के अंदर आते हैं, वो अलग एक अलग कैटेगरी ऑफ वर्ब्स आता है, वो आप आगे सीखेंगे। राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड इट दिस वे। ठीक है, विच पेन डिड यू वांट टू बाय? आई वांट टू मीट विद द मैनेजर। whom do you want to meet? Right, whom do you want to meet? Like this, whom do you want to meet? Right. I went to train by, I went to Delhi. Okay, this one is the same thing. Okay, ये same question है. You don't need to tell this one. It's the same thing what was given over here. ठीक है. आप लोग ऐसे अपना कुछ भी अपना frame कर सकते हैं. Right. I went to, yeah, I went to market by, market by bike. How did you go to the market? How did you go to the market that way? Simple, right? How did you go to the market? Okay. Simple ones, everyone. These are simple. जो कोई भी sentence ऐसा रहता है, then if you want to frame, अगर आप frame करना चाहते हैं WH words के साथ, तो आप ऐसे वहाँ पे देखिएगा क्या object या subject के बारे में आप frame करना चाह रहे हैं, right? नहीं तो अगर आप yes no questions के साथ देखना चाहते हैं, then what you can take is the helping verb choose करके आप वहाँ पे ये बात कर सकते हैं, right? So this is how you will be framing, right? I hope you have understood this. ये बहुत आसान था, nothing much what we did over here, क्योंकि आपने इससे पहले और difficult sentences से आपने frame किया था, ठीक है? Where did you do, what did you do वाला ये था जिसके साथ आपने answers भी बताया था. आज आपने उसका उल्टा काम किया. You did the opposite, where you were given sentences and you had to frame questions, right? Okay, this is how the answers for this. Now let's move on. We have a big activity now coming up जो है, it is regarding speaking cards. ठीक है, तो आपके सामने ऐसे different cards place किए जाएंगे. ठीक है, मैं flip करते जाऊंगा. There are some around 15 cards there. ठीक है, हर एक कार्ड का आप आंसर ऐसे ही बोल सकते हैं. You can tell it in front of the phone or screen wherever you're watching. आप simple questions what they are. But try to tell those answers there. There are very simple questions. Okay. There are WH questions. WH questions के words भी होंगे, and the answer what you have to tell, and even the to be verb forms will also be there. Great. Okay, let me just share you that. Give me a moment. Okay. Yeah. So this is what will be there here. Okay, if you are able to see, ये deck of cards की तरह है, right? एक एक कार्ड को flip किया जाएगा, ठीक है? And you will have to tell different answers there. Question को समझिएगा, it's very simple and easy, and you will be able to tell answers. Okay, now the first one, were you awake in the morning? ठीक है? Now just give me a moment. Okay. Oh yeah. Okay, yeah, you will be able to hear the sound also here. ठीक है, तो were you awake in the morning? क्या आप सुबह उठे थे? Were you awake in the morning? तो is this question a yes no question or a WH question? First you have to observe that. ठीक है, तो where यहाँ का बात किया जा रहा है. Now where is in yes no or a WH? Yes, exactly. If you have said yes no, yes, it is with a yes no question. So if you are awake today morning, you will say yes, I was awake in the morning. Right? अगर नहीं थे, no, I was not awake in the morning. Right? So yes or no, that is what it comes over here. Now, समझ में आया? I hope you have understood this. Okay, now let's move on for the next one then. Give me a moment. Yeah. Okay, now the next one here. Okay, why was she late for the class? Now you can give any answer here. First you have to see, आप यहाँ देखिएगा, is it a yes no question or a WH question? Why? It comes in the WH category, right? Now, why was she late for the class? Your preferable answer, right? She was late for the class because she came by her cycle, by her bike. Okay, she got stuck in the traffic or any reason, कोई भी reason आप वहाँ पे बात करके कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि WH questions के लिए हम लोग एक statement देते हैं answer, right? Yeah, your answer.
Great. Okay. Why was she late for the class? She was late for the class because she was ill. ऐसे भी कह सकते हैं. Right? Great. Now let's move forward then. Now this is for an B form one. Okay. They dash studying in the classroom. Past form what you have to tell. Now what will you think about? What were the B forms there? Great, great. Exactly. That is the answer. What if you have said this, then it is absolutely right. Okay. Now they is a pronoun and it is for plural pronouns. ठीक है, तो plural pronouns के साथ, plurals के साथ अगर हम लोग past tense में बात करते हैं, तो what is the word what we put? We put were. They were studying in the classroom, right? This way. Okay. Now, yeah. Let's move on for the next one. Okay. Now, you dash late for the dinner. Now, again in the past form, how will you tell that? You के साथ हम लोग कौन सा helping verb हम बात करते हैं? What was the helping verb? What we talk about there? Right? Which be form word? What you use? Exactly. Again, it is where. ठीक है? Again, it is where over here. ठीक है? You were late for dinner. ठीक है? Past form. नहीं तो अगर आप यहाँ पे I के साथ आप कहते थे if the word I would have come, I was late for dinner आ जाता था. Right? अभी you second person के साथ you always say in plural. The verb there is always in plural. Right? You were late for dinner. Like this. Right? Okay, let me just clear this. Let's move on for the next one. Where will he go today? Your answer. He will go for playing basketball. He will go to the market. He will go anywhere, wherever he likes. ठीक है, जहाँ उसको मन है वो जाएगा. Right? But the answer here is always in the statement. Right? It's not with a yes. That is what you have to always observe. Great. Okay. Now there are some more questions like this. मैं जल्दी जल्दी आपको cards दिखाते जाता हूँ. You can frame your answer. Right? Just be observe करिएगा वो yes no है या WH है. That is the only thing what you have to keep in mind. Okay, now next one. Are your grandparents living with you? No, my grandparents are not living with me. They are not living with me. I live with my mother and my brother. Right, your answer, आपका आंसर कुछ भी हो सकता है there. You might be living with your parents, so आप yes कहेंगे. ठीक है, अगर नहीं है तो you can say just directly no. Okay, let's move on. Are they playing in the class? Now again, it's a yes no question, right? Okay, are they playing in the class? No, you're not playing in the class. You are listening to the class, right? आप मेरा class सुन रहे हैं. So no, they are not playing in the class. अगर खेल रहे हैं तो yes, they are playing in the class, right? Okay, like this you can frame. Great one. Now we dash ready for the school. Present form you have to tell. Now just observe. थोड़ा सा देखिएगा. Present form it is. What were the be forms there, right? And according to that you will put your answer there. Yes, exactly. If you have said we are ready for school, yes. We plural के साथ है, are plural में आता है. That's why we are ready for school. Right? This way. Okay? Correct? I'll clear this and then we'll move forward. Is your mother coming today? Is your mother coming today? क्या आपकी मम्मी आ रही है आज? Right? Is your mother coming to me? It can be anything there. ठीक है? In the mother's place, you can put uncle, father, sister, brother, anybody can come. ठीक है? Is your mother coming today? क्या आपकी मम्मी आज आ रही है? Right? No, she is not coming. I'll be going alone. Yes, she is coming. Right? Yes, no. That way. Great. Okay, let's move forward then. Yes. Is your sister hungry? Is your sister hungry? Right? क्या आपकी बहन भूखी है? Right? No, she is not hungry. She is well fed. Now, well fed, what I said is बहुत अच्छे से खा चुकी है, खा पी करके बैठी है. Right? That is how you can tell. ठीक है? Or else simply, yes, is she hungry? No, she is not hungry. Right? अगर भूखी है, if she is hungry, you can say, yes, she is hungry. Please give her a biscuit. Please give her a chocolate. Like this. Okay? I hope you are able to understand. Right? Now the next one again. My homework dash ready. Now again, be forms, present form, what you have to tell. Please do try. Great. If you have said this, my homework is ready, then it's absolutely right. Right? My homework is ready. Correct?
प्रेजेंट एक सिंगुलर है, एक ही होमवर्क दिया गया है, ठीक है, और एक ही किताब में आप लिखेंगे। नाउ एक ही होमवर्क है, दैट्स व्हाई इट्स सिंगुलर। होमवर्क्स होते थे तो देन इट वुड बी आर, माय होमवर्क्स आर रेडी, राइट। डिफरेंट सब्जेक्ट के हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट बुक्स ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट, it's singular here, so singular what will write, the verb will also be in singular, right? Okay, let's move on next. Now, what did you eat in the morning? What did you have, children? What did you have in the morning? Right, I had bread and I had tomato soup today in the morning because I have throat problem. That's why मुझे गरम कुछ पीना था. I wanted to have something hot. That's why I had bread and tomato soup. I think you might have something great, right? आप लोग ने भी बहुत कुछ different खाया होगा today because it's Makar Sankranti and everybody celebrates something. Something good is always made at home, right? That's why, right? You can tell whatever you want, but your answer will always be in a statement. याद रखिएगा that. Great. Let's move forward then. Great. What does your father do? ठीक है. Now my father do. Yes. आपके पापा क्या करते हैं? ठीक है. That's what you tell in Hindi, right? So you can tell anything there, children. My father works in Indian government. He works in the railways. He works in a bank. He has an own business. He works in a shop, right? जो भी आप बोलना चाहे, you can tell, right? The statement वहाँ पे याद रखिएगा. My father works. नहीं तो my father has a business. नहीं तो business में काम करता है ऐसे. Right? Simple sentences there. Okay. Answer should be in a statement. Great. Where are your glasses? आपके चश्मे कहाँ हैं? Glasses. It's spectacles. What you say, right? Where are your glasses? My glasses are in the other room. My glasses are on the table. My glasses have fallen down. Right? ऐसे sentence के साथ आएगा. Great. Okay. Let's move forward then. When will be your next class? आपका next class कब होगा, children? When will be your next class? As today it's Monday, next class for you it will be on Wednesday. The next class, sir, will be on Wednesday. ठीक है? Or Wednesday. My bad. We shouldn't say it at Wednesday, right? Right. Wednesday. Right. The next class will be on Wednesday. Like this. Great. Yeah. Next one. The cup dash on the table. Now present form. It's singular. Yes, very good. If you have said this, अगर आपने इस कहा है, correct. The cup is on the table. Present form. The cups अगर रहता था तो are हो जाता था. ठीक है? The cups are on the table. But now cup singular. That's why. Great. Okay, I'll just clean this. Now the next one. Are you going to school tomorrow? Are you going to school tomorrow, children? If yes, if it's a yes no question, are aa ja raha hai, that's why. If yes, then yes, you're going tomorrow. If no, you're not going tomorrow. Right? That is good. Right? So how will you say that? Yes, I'm going to school tomorrow. No, I'm not going to school tomorrow. Anything like that. Okay. Great one there. Good. Next one. Yeah. What are your hobbies? Right? Now this is a simple question. आपके hobbies क्या है? You might have different hobbies, children, right? आप लोगों का favorite काम जब आप free रहते हैं, whatever you do, right? You can tell it to yourself. My favorite, like for example, my favorite hobbies are, okay, I like playing outside. Whenever I get chance, I like playing outside. I do like to paint. And one more new hobby what I have got is going on a bike ride. Okay, that is one of my favorite things what I like to do when I free, right? These are my few favorite hobbies what I like to do, right? So आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं. My favorite hobbies are painting, reading a book, going out, going on a bike, okay, or cooking or anything, right? It can be anything. Hobbies क्या होता है, right? In your free time, what you like to do, right? Those are called hobbies, right? Like that. Okay, so should we move on for the next one? Great. Now, where do you, okay, there should be a word over here. Where do you play football every day? ठीक है, where do you play football every day, children? If you go out for playing football, where do you go? I go to play football every day in the ground. ठीक है, ground में मैं खेलने जाता हूँ football. ठीक है, I go to play football in the ground every day. Right, I go to play football in the turf every day. ठीक है, turf वाला जो मैदान होता है, right? तो वहाँ पे भी आप you can tell that also. Right?
Good one. The last one I think we have now. Okay, anything I can tell. Where do you go? Where WH word हो जाता है. Which W you can tell anything there. Okay, now let's move on. Last card what we have is everyone in the class. Now it's a yes no question, right? So yes or no. No, no, everyone is not there in the class. Or yes, everyone is in the class. Anything it can be. ओके आई होप आप लोग को समझ में आया यस नो क्वेश्चंस कैसे होते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चंस के कार्ड्स हम लोग कैसे बात करते हैं विथ ऑल ऑफ दीज यू हैव डिफरेंट वेज ये कैसे होता है कि जब आप स्टॉप दिस जब भी आपको ऐसे कार्ड प्लेस होता है तो आप पढ़ के आप देख के बता रहे हैं आंसर यू आर एबल टू टेल इट रीडिंग द सेंटेंसेस बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पूछ देते हैं व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ जैसे क्लास में अगर टीचर रहती है तो आपको पूछ देती है क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे कह दिया जाता है प्लीज गेट योर होमवर्क हियर ओके श्याम डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क राइट सो डायरेक्ट क्वेश्चन इट इज वोकल कन्वर्जेशन आ रहा है राइट सो हमेशा हम हर क्वेश्चन के लिए तो प्रिपेयर नहीं कर सकते लेकिन समझना पड़ता है कि व्हाट दे हैव टोल्ड राइट तो सुनना पड़ता है यू हैव टू लिसन right you have to listen what kind of a question it is coming is it a yes no question is it a statement one where you have to where the question is wh word ठीक है wh word के साथ है like that okay so it's easy you need to just practice some more and हो जाता है that's it okay now I have a small activity again the second the third one what we have right आप अपने आप को introduce कैसे करेंगे how will you introduce yourself that is one activity like for example I would introduce myself saying that hi my name is Nishant I live in Hyderabad I have completed my studies in Hyderabad and I'm living here with my parents and my brother here right I love to play cricket football and also paint sometimes and I do love to go out and bike rides राइट तो मैंने क्या किया वही क्वेश्चंस जो हमने बात किया था उसी के सेंटेंसेस हमने फ्रेम करके क्लब करके एक छोटा सेंटेंस बता दिया ठीक है ऐसे ही आप सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन जो आप कहेंगे ऐसे आप बताएंगे एक ग्रीट करेंगे पहले ठीक है हाय हेलो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग माय नेम इज दस ऐसे आप कहेंगे एंड देन आफ्टर दैट आप कहाँ रहते हैं क्या करते हैं छोटा सा एक ब्रीफ बता देंगे ठीक है एंड देन यू विल टेल रिगार्डिंग अदर थिंग्स ऑल्सो इफ यू आर फ्री विथ इट एक एग्जाम्पल है अब मैं तो यहाँ ओरली बोला हूँ आई हैव वन मोर हियर विथ फॉर यू सो दैट यू कैन ऑल्सो आप उससे ऑब्जर्व करके देख भी सकते हैं व्हाट यू कैन डू ओके सो लेट मी जस्ट शेयर इन दिस स्लाइड जैसे ये देखिएगा हेलो माय नेम इज मंजू आई एम फ्रॉम पुणे I am a student. I am a student. In my free time, I like reading books, playing badminton, and playing badminton. Nice to meet you. How about you? What do you like to do? ठीक है जैसे आप किसी से मिले ठीक है आप अपना नाम पूछे अपने बारे में बताए उसके बाद ऑब्वियसली आप उनके बारे में भी पूछेंगे उनका नाम क्या है कहाँ रहते हैं क्या करते हैं राइट द सेम थिंग हाउ इट विल बी राइट सो जनरल इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस व्हेन यू आर मीटिंग समवन राइट यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप क्या कैसे पूछेंगे ऐसे ही तो पूछेंगे राइट द सिंपल वन नाम व्हाट इज योर नेम व्हाट डू यू डू राइट लाइक दिस इज वन सिंपल एग्जांपल नाउ यहाँ पे देखिएगा हाउ डिफरेंट क्वेश्चंस आप ग्रीट कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बताया ओके सो लाइक फॉर एग्जांपल हियर ग्रीट अप हेलो हाय गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे कुछ भी आप ये ग्रीट करने के लिए आप कह सकते हैं राइट हेलो हाय और समथिंग नाउ इवन देन आप लोग उसके बाद नेक्स्ट जो बोलेंगे इट इज़ बेटर टू टेल योर नेम क्योंकि बिफोर अगर आप नाम नहीं कहते तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा आप कौन है राइट अपीयरेंस में तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर बॉय में योर मेल और फीमेल राइट वो तो उनको समझ में आ जाएगा बट इफ यू डू नॉट टेल द नेम it will not be a good way of communication that it's better always to tell your name also after that नाम बोलना बहुत जरूरी हो जाता है okay first one what you'll do you'll greet and then you'll say my name anything there my name is this so and so ये आप कहेंगे right then आप कहाँ से हैं you have to mention your origin ठीक है where you are from right that is also important that mention your from I am from okay this city I am from Hyderabad जैसे मैं हैदराबाद से हूँ तो you I'll say I am from Hyderabad आप कहीं से भी हैं you are from any state in this country you can tell that
Okay, so these are the first three things जो basics होते हैं. Then after that there are some more. I hope you just pause the video for a second. ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है, ग्रीट करेंगे, देन यूल शेयर योर नेम, यूल टेल रिगार्डिंग योर ओरिजिन, कहाँ से हैं आप, वो भी आप बताएंगे. यू कैन जस्ट टाइप दिस क्विकली, राइट. एंड यू कैन ऑल्सो उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा ये भी है. ओके, चौथा, पांचवा, छठवा ये सब भी है. फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ ones what are there, what you will tell. नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट, आप क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन और स्कूल व्हाट यू आर स्टडिंग. ठीक है, वो आप ये कह सकते हैं. ठीक है, नाउ दिस वन, शेयर व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं और कहाँ पढ़ते हैं वो आप बता सकते हैं. एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7th ग्रेड, ऐसे आप कह सकते हैं. नहीं तो अगर आप कुछ काम करते हैं, वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्री और इन अ स्मॉल शॉप और इन अ प्लेस, कहीं पर भी आप कुछ ऐसे भी कह सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन व्हाट यू कैन टेल. Right. Now, after this, what is important is to tell regarding your hobbies and interests. जो आपको मन करता है जब आप खाली रहते हैं. Whenever you are free, whenever you want to tell something, you want to do something, what you enjoy, वो सब आप यहाँ पे briefly कहेंगे. Briefly छोटे में कहेंगे, बड़ा चढ़ा के नहीं कहेंगे. Right. Okay. So, talk brief about your hobbies or things you enjoy. Right. I like playing cricket or badminton, or I like painting, singing, music. I like singing or playing music. ऐसे आप कह सकते हैं. ठीक है, नहीं तो you can also improvise your sentence saying that in my free time I enjoy playing music, I enjoy painting, I enjoy going out on my bike. Right, like this you can tell. Now closing, after that closing आप ऐसे ये कह सकते हैं. After that closing जो हो जाता है ये चौथा, this is the fifth one and the sixth one. Closing आप ऐसे कह सकते हैं, फ्रेंडली रिमार्क, खुशी का कुछ ऐसे हैप्पीनेस के साथ आप एंड कर सकते हैं ताकि कन्वर्जेशन और आगे हो. ठीक है, नाइस टू मीट यू, अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, नाइस टू मीट यू आप कह सकते हैं. फील फ्री टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी. जैसे डाउट्स के सेशंस में हम लोग वी एज टीचर्स हम लोग भी वही करते हैं कि हम लोग पूछते हैं कि चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क एनीथिंग टू मी. आप कुछ आप और पूछना चाहते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं. ठीक है, but the best one will be for you to say nice to meet you, like this you can tell. Okay, so this is what you can do. Great. Okay, एक छोटा सा ये है. I have some examples, थोड़े और examples हैं where you can understand how a person can be a person introduces to himself. ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं. Before that again I just want to repeat. पहले आप greet करेंगे, उसके बाद अपना नाम कहेंगे, कहाँ से है वो बताएंगे, क्या पढ़ते हैं, क्या काम करते हैं वो बताएंगे, इंटरेस्ट एंड हॉबीज आप बताएंगे. फिर बाद में 6th वन यू विल टेल रिगार्डिंग अ क्लोजिंग रिमार्क है. क्लोजिंग कन्वर्जेशन करने के लिए आप नाइस टू मीट यू, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग टू मी, ऐसे आप कह करके एंड कर सकते हैं. राइट, दीज आर द थिंग्स व्हाट यू कैन डू व्हेन टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जब भी आप किसी अपने आप को किसी के सामने बारे में बताना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस सिचुएशंस. राइट, सिंपल क्वेश्चंस है, व्हाट आर दैट. ग्रेट. नाउ these are some examples. आप ये पढ़ सकते हैं. You can read few of them. These are very easy and simple. Hi, I am Ali. I am from Hyderabad. I work as a teacher. I enjoy listening to music and going for walks. Nice to meet you. ठीक है, ये भी एक अच्छा ये हो जाता है. Hello, my name is Mia. I am from Mumbai. I am a student. I love drawing and watching movies. It's great to be here. आपसे मतलब यहाँ आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा. What you can tell. Right, it's great to be here. Hi, I am Dilip. I am from Shimla. I work in a bookstore. I like playing guitar and reading novels. Nice to meet you. Like this also you can tell. बहुत छोटा सा है, सिंपल सा चीज़ है. ठीक है, कहाँ से आपका नाम, पहले द ग्रीटिंग व्हाट यू आर गिविंग, योर नेम, योर प्लेस. ठीक है, कहाँ से हैं आप क्या करते हैं, पढ़ाई क्या करते हैं, योर इंटरेस्ट, एंड द लास्ट वन थैंक यू और nice to meet you, what you can tell, and ending statement, ending greeting, what you can tell. Okay, I hope you have understood regarding how to introduce yourself. Please do try. आप लोग अपने आप से भी try करिएगा. And you can tell it to yourself in the mirror, या आप अपने आप को ही मिरर में बोल सकते हैं. और else आप किसी अपने दोस्त के साथ, with your parents, with your brothers or sisters, you can ask the same thing. ऐसे आप भी उनको बोलिएगा कि चलिए हम दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं. ऐसे एक छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं. What you can do. Great. Okay. ये this is just an example.
आई डोंट थिंक यू नीड टू राइट दिस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 2-3 पॉइंट 6 पॉइंट जो है, जो आप इंट्रोडक्शन में जब आप कैसे यूज़ करते हैं जो वर्ड्स, आप यहाँ कह सकते हैं। इवन यू कैन राइट हियर सेइंग दैट, अगर समय का अगर आप जानना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ निशांत, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो मैं क्लास के स्टार्टिंग में जो इंट्रोड्यूस करता हूँ, द सेम वे यू कैन ऑल्सो यूज दैट। Okay, so these are 6 points what you can use later, right? Okay, now next one is about an interview. ठीक है, now generally जो बहुत छोटे से इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, जनरल इंटरव्यूज व्हाट यू हैव, राइट, जहाँ पे हम लोग नहीं बात कर रहे हैं कोई जॉब स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इंटरव्यूज नहीं है, या समथिंग वेरी सीरियस ऐसे इंटरव्यूज नहीं है, वहाँ पे आपको यू हैव टू हैव दोज टेक्निकल टर्म्स के बारे में होता है। बट जैसे अगर आप स्कूल में हैं, इंटरव्यू जो होता है जनरली वो तो आप टीचर एंड स्टूडेंट के बाद में होता है, जनरल स्मॉल इंटरव्यूज व्हाट यू हैव। तो जनरल क्वेश्चंस जो हैं वो ये सब आ सकते हैं आपके सामने। व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू एंजॉय इन योर फ्री टाइम, which class do you study, what are you studying right now, what are you good at. These are the simple questions what an interviewer, जो interviewer है वो आपको पूछ सकता है। पहले 2 क्वेश्चंस तो बहुत आसान है। व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो आप अपना नाम कहेंगे, माय नेम इज सो एंड सो, राइट, माय नेम इज गीता, मीता, सीता, एनीथिंग व्हाट यू कैन टेल, राइट। वेयर आर यू फ्रॉम, विच एवर प्लेस यू आर फ्रॉम, ठीक है, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ओके, जयपुर, एनी प्लेस यू कैन टेल, राइट। सो नाउ कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपके बारे में वो इंटरव्यू जानना चाहता है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे थोड़ा बढ़ा करके भी बोल सकते हैं कि मैं पुणे में रहता हूँ, आई लिव इन पुणे, आई लिव विद माई पेरेंट्स, ओके, और एल्स आई लिव इन पुणे, आई लिव अलोन, ओके, फॉर अ चाइल्ड ऑब्वियसली यू लिव विद योर पेरेंट्स, ठीक है, ओके, आई लिव विद माई पेरेंट्स, ओके, आई आई लाइक आई लाइक आई लाइक पेंटिंग, जो आपके हॉबीज़ हैं वहाँ पे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। दैट इज़ वन और टू सेंटेंसेस ही आप बोलेंगे, ठीक है, वेरी लिटिल, ठीक है। आई लिव इन, वेयर आर यू फ्रॉम, जब अगर मैं पूछ दिया आई लिव इन पुणे, ठीक है, कैन यू टेल अ लिटिल मोर अबाउट योर सेल्फ, यस certainly yes I can, right. I live with my parents in Pune, right. I like painting, I like drawing and watching TV, like this you can tell, right. So what do you do, what do you enjoy during doing in your free time, ये अलग question हो जाता है। This is basically a hobby जो आप कहते हैं, ठीक है, that is what comes over here, hobby जो आपको पसंद है। Please don't tell your hobbies are playing games in your phones or laptops. I mean, it's a free time, but it is not an hobby actually. Not exactly a hobby. But yeah, people have made gaming also and a new field of work. But that also can be said, but not exactly. Okay. But always keep in mind it should be a little creative thing, अगर वो creative चीज़ होता है तो that is the best way, painting, drawing or tasting different food, that is also a good one, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। Okay, which class do you study? I study in 7th grade, 6th grade, 8th grade, 9th grade, any class you can tell, जो भी आप ये कह सकते हैं। What are you studying right now? Now these are what are you studying right now, same question है, ठीक है, वो एज अ क्लास की तरह आप बोल सकते हैं, या आई मीन इन विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडिंग, जो स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं वो आप बोल सकते हैं। और एल्स इफ़ यू हैव कंप्लीटेड, जैसे अगर आपने इंटरमीडिएट ख़त्म कर दिया है तो वो अभी आप कह सकते हैं आई एम इन माई बैचलरेट नाउ, मैं अभी बैचलर्स पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं अपने इंटरमीडिएट में हूँ, राइट, 11th में हूँ, 12th में हूँ, एनीथिंग यू कैन टेल लाइक दैट। Okay, I'm studying in my 11th, I am in my intermediate studies, I'm completing my intermediate studies, like that you can tell. Okay, what are you good at? Okay, I am good at what I am good at. I also have to think for a second. I am good at teaching, that's why I am teaching here, right. I am good at sometimes cooking, not every time, but yeah, I am good at, okay, going to different places. I mean, that is not exactly that, ठीक है, good at तो वहाँ नहीं आता है, but it should be a certain thing what you do, right. I'm good at painting, right, like this,
These three last के ये जो questions जो हैं, this one and this, these are generally to tell, to know about the person's hobbies. Hobby के बारे में जानना ये आता है. Okay, so ये general questions होते हैं for an interview, right? Questions के साथ I have few one small work, I mean example here, ठीक है? तो जैसे सेम क्वेश्चंस के साथ अगर आप किसी को पूछा जाता है एक इंटरव्यू तो आप ऐसे ही कह देंगे, ठीक है? माय नेम इज खान, ओके, आई एम फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर. सर्टेनली अगर कोई पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो सर्टेनली आई एम अ स्टूडेंट, आई लिव विथ माई पेरेंट्स एंड आई हैव अ पेट कैट नेम्ड लोबो, राइट? लाइक दिस यू कैन टेल. ओके, नाउ फिर बाद में जो दूसरा ये आ जाता है, अगर आप जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जो था, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम, तो आप ऐसे बोलेंगे आई एंजॉय पेंटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पेपर क्राफ्ट्स, ऐसे आप कह सकते हैं. This is how you can tell. Now someone is asking which class do you study? I study in the 7th class, 7th grade of my school. का नाम आप उसके साथ include भी कर सकते हैं. You can even include your school's name after that. Okay, what am I good at? Okay, I am good at painting and playing basketball, like this. So your activity today would be as a small homework. ये questions के आपको note down करना पड़ेगा. ये questions को आपको note down करके try to frame few things of yourself. ठीक है, आपके बारे में लिखने के बारे में देखिएगा. It's a very simple and easy activity what you can do, right? Please do try to do it. Okay, very easy, very interesting it will be, right? Different activities you do, right? आपके घर पे आप different चीज़ करते हैं जो आपको खुशी लगता है करने के लिए, ठीक है? You can do that and that. Okay, so these are the few things what were there today, right? ये छोटे से चीज़ थे जो आज हमने डिस्कस किया, right? वेरी सिंपल एंड ईजी, डू नॉट वरी. ये सब पूरे बात करने वाली चीज़ है क्योंकि आपने डिफरेंट सेंटेंसेस आपने फ्रेम किया. मैंने सेंटेंसेस के साथ इसलिए आपको कहा था कि आप लोग सब्जेक्ट चेंज करके सेंटेंस फ्रेम करिएगा. आप लोग वैसे सीख पाएंगे बहुत सारे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, राइट? धीरे धीरे करके बोलना भी बहुत आसान हो जाता है. एक बार आप लिखना शुरू कर देते हैं तो टेलिंग इज, स्पीकिंग समथिंग इज वेरी इजी, राइट? ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स. हम लोग पोजेसिव्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? उसमें भी सेम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होगा, ठीक है? यहाँ पे भी जैसे हमने टू बी वर्ब के बारे में बात किया था, ठीक है? प्रेजेंट, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे आए थे, ठीक है? तो पोजेशंस के साथ भी ऐसे हो जाता है. मैं नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये इंट्रोड्यूस करूंगा इसके बारे में. वहाँ पे भी हम लोग फिर ये करने के बाद आप फिर देखेंगे कि कैसे डिफरेंट फॉर्म्स आएगा सेंटेंसेस का. यस, ऐसे करके वी विल बी कंप्लीटिंग डिफरेंट सेम थिंग. नेक्स्ट सेशन देन अगेन हम लोग एक स्पीकिंग कार्ड्स रहेगा, वहाँ पे भी आप देखेंगे जैसे कार्ड से मैंने यहाँ सेंटेंसेस फ्रेम किए थे वैसे ही आप यहाँ पे भी फ्रेम करेंगे. Okay, these are the things what we will be doing in the next class. If you have anything, any doubts, you can just put that in the comment section. ठीक है, बहुत आसान है. It is nothing. Only thing is you have to push. आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर के ट्राई करना है यही चीज़ों को जो आपने अभी क्लास में देखा है. Okay, anything if you have, you can tell in the next class. आप लोग नीचे कमेंट्स में ये कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. And that will be it, everyone. We'll meet again in the next session. Thank you and have a nice day. Thank you.